interpersonal relationships. Maybe my father enjoyed with his colleagues and friends. Today, I am not very sure who is my friend and who is not my friend. Do you all agree on this? The bonding between the friends, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा है. The bonding between the friends, the bonding within the colleagues, the bonding of the family members, even from a very distance, for good or for bad, I am not going to comment on that, but that is what is happening in our society. And all of us, becomes our responsibility. That is why we chose this topic, interpersonal relationship and relationship management. Somewhere, if we are having that kind of bonding, you have no idea how much moral boost it can give to you. Many times, just now before the tea break, I mentioned that sometimes if I go for a walk with a friend, with my spouse, or with many times I take a walk with my daughter or with my son, and sometimes we talk, sometimes we do not talk. Your presence, that bonding is so morally boosting you. I might not have ventured to go to lake, but since my wife or my daughter or my friend who has come from a distant place has told me that I'll go to Sukhna, going together and walking itself is a very big thing. And yesterday, if you recall, I was giving you an example that, and it happened for good number of years when they were in the years of preparation, when my children were studying in their own bedrooms and I was giving them company sitting in my bedroom. Yes, no communication, but then simply your presence. So your bonding, all that things pay a lot and increase your performance, enhances your chances of getting through those trials. Those period of trials in +1 and +2 are very high for the students. Same was the case with my children too. When they were in +1 and +2, they were really very rigorously praying. But then, not only I will not give full credit to my staying awake in my bedroom, their own working very hard, their teachers, so many things. But your presence, your interpersonal relations play a very significant role. And I feel today very proud, father, that my son did his education from one of the topmost schools in India. IIT Kanpur से उसने PhD करा, BTech करा, postdoctoral करा. Now he himself is a faculty in Roorkee, IIT Roorkee. So similarly, my daughter did in BITS Pilani, आपके राजस्थान से करा उसने, and now she is in Munich, enjoying the topmost companies के उसके पास offer है सब. Now she's working in Synopsys. I mean, those kind of relationships, those kind of things actually play a very significant role. At times, ऐसा नहीं है कि we didn't exchange the blues. We exchange the argument sometimes. But then the moment I smelled, because I was so well trained by my teacher in communication skills, English and communication skills, I knew it that he is in the state of argument, but I will not get into the argument. So, but then sometimes you get carried away. And if you are aware that you are being carried away, you can come back. But let at any cost your hearts not be at a distance. The moment your hearts are at a distance, those distances sometimes are very difficult to cover. And everyone, including your spouse, including your parents, including your children, including your family members, your colleagues, your friends, they have their own space, they have their own salvation in the life. You cannot die with them. You are not born with them. Somewhere in this life we meet, somewhere in this journey we share our journeys, and let those journeys be pleasant journeys. Yes? जैसे हम लोग, मेरे को याद है मैंने सेकंड क्लास में बहुत बार ट्रैवल करा when I was quite young, and my sports took me to those journeys. चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर हम लोग जैसे चेन्नई में कंपटीशन हो रहा है, या हैदराबाद में वी हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ रोइंग इन हैदराबाद हुसैन सागर लेक में, या पुणे में. वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय सेकंड क्लास. Initially, when we entered in a compartment, unknown people are there. We are having a team of, let us say, 27 people, mostly 27 to 30 people. Rowing की
different categories, boys and girls. If the boys are there, 18 people plus one or two extra players, and then the manager and the coach. I went as a manager and coach later on when I became officials. Initially, I could see when I look back some kind of possessiveness. ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, आपने इधर बैग इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो. After some time I am welcoming them, my players are helping them to put their adjusting their bags and all. We became so friendly. Yes, we after once the train start moving, with our fellow passengers we develop a relationship. Similarly, when I am driving a car on the streets, I should have and usually I try to find who's driving behind me, who's driving, along with me or front of me. Is there a lady? Is there an old person? The person at the back is honking. He may be really in a great rush. Let me give him the way. All those small things, we develop a genuine relationship of being Chandigarhians. He's also comes from my city. Let me give him a little space today. He might be in a hurry. Like Dr. Shilpa was getting late, so she might be driving a little fast today. The person on the wheel on the other car may not be knowing that you are in a hurry or you're. So let us try to have that. Give yourself chance. Give other chance to be understood and try to understand each other. Understanding is one of the very important things. My dear friends, before I start, let me share a very small video with all of you. This has some connection with my topic today, but then it is a very interesting video. एक छोटी सी कविता है. My friends from South have a complaint that they don't understand Hindi. Friends, try to understand. It is very slowly spoken and you will be able to understand this. Mera Chota Sa Mahalla. This is a story, the title of this poem. So you can increase the volumes of your laptop or your mobile from wherever you are logging in and listen to this small poem, so beautiful. मेरा छोटा सा एक मोहल्ला था. जुड़ी जुड़ी थी छतें सभी की, आंगन सारे लगे हुए थे. गलियां सकरी थी पर दहलीज बड़ी थी. गलियां सकरी थी पर दहलीज बड़ी थी. यादों की उन गलियारों में मन कभी कभी यूं ही तफरी कर आता है. मेरा छोटा सा एक मोहल्ला था. हर घर की एक खास निशानी थी और अजब गजब थे पते सभी के. 201/46 3 इमली के चौराहे पर, टेढ़े खंबे की सीध में, चाय की टपरी छोड़ के, कच्चे मंदिर के बाजू से, पक्के कुएं के पीछे. अब होते नहीं ऐसे पते. अब कहाँ ये कोई कहता है कि पूछ लेना आगे नुक्कड़ पे, बतला देगा कोई भी. अब नहीं वो आती उत्साही लोग जो पता पूछने पर घर तक छोड़ाते थे, मोहल्ला धर्म निभाते थे. ताक झाकिया किस्म के गूगल मैप की बड़बड़ में खामोश हो गए हैं कुछ रिश्ते. मेरा छोटा सा एक मोहल्ला था. हर साइज हर शेप के बच्चे घर से ज्यादा गली में मिलते. भाई बहन संग धिंगा मस्ती अंदर बाहर गूंजा करती. बुआ चाची मासी मम्मा, मामी नानी दादी अम्मा, पापा मामा फूफा जी दादू नानू जीजा जी, सबके गुटगुन ताड़े होते. दिल खोल के बतियाने को आंगन छत और बाड़े होते. कुछ रिश्ते उस दौर के एक्सटिंक्ट हो गए हैं. मोहल्ला जिनसे बनता था वो परिवार श्रिंक हो गए हैं. मुझे याद है कुछ सहेलियां दबे पांव आकर पीछे से आंखें मीच लिया करती. कलाइयां टटोल के अक्सर मैं भी उन्हें पहचान लिया करती. गली के कुछ पुराने लड़के जमा हुए थे नए नए, बालों में कंघा घुमा घुमा के कनखियों से निहारा करते थे. नजर मिल जाए कभी तो झेप जाया करते थे. भले से थे वो भोले से रिश्ते. मेरा एक छोटा सा मोहल्ला था. कंबाइंड स्टडी की आड़ में जम के गपशप मस्ती होती. आधी रात में बासी पूरी संग गरम चाय की चुस्की होती. इस दीदी से उस भैया के नए मटक्कों के किस्से
चक्कर वक्कर अफेयर लफड़े फेवरेट सबके सब्जेक्ट होते। मिर्च मसाले लगा लगा के चटखारे लेकर सुनाए जाते। गली के लैला मजनुओं के जोड़े फिर बनाए जाते। पढ़ंतुओं चुगलखोरों की ग्रुप में एंट्री बैन रहती। खड़ूस जलन कुकड़ों की मगर आत्मा बेचैन रहती। जब पीपल की डालियां हवा से सरसराती थीं, भूतों के किस्सों वाली पिटारियां खुल जाती थी। बिजली गुल हो जाए तो गिग्गी सी बन जाती थी। फिर रातें बातों बातों में आंखों में कट जाती थी। मेरा छोटा सा एक मोहल्ला था। मंगनी, शादी, मुंडन, बर्थडे चाहे हो जिसके घर में त्योहार से मनाए जाते। छोटे मोटे झगड़े झंझट चट होते पर सुलझाए जाते। पीढ़ियां जाती आती लेकिन दाढ़ी वाला वो बूढ़ा बरगद बरसों से वहीं खड़ा था। शाखों पर जिसकी बया ने बुने थे अनगिनत घोंसले, छांव में उसकी हमने भी चुने थे कुछ ख्वाब सुनहरे। मेरा छोटा सा एक मोहल्ला था। जबरन धबक के आ गया है घुसपैठिया लंपट शहर मेरे मासूम मोहल्ले में। तुलसी वाले आंगन में अब मॉल मल्टियां तन गई हैं। बचपन उन्हीं के भीतर ही न जाने कब बड़ा हो जाता है। जिस सोच के ये घबराता है कि इस दौर के बच्चों की दुनिया डिजिटल हो गई है। ऑनलाइन गेम्स की महामारी बुरी तरह से फैल गई है। मेरा भोंदू सा बचपन गुजरे वक्त की खिड़की से सहमा सहमा सा झांकता है कभी कभी। अब मेरा वो छोटा सा मोहल्ला एक टाउनशिप कहलाता है। मन मेरा अब भी लेकिन किसी स्मार्टफोन के अनाड़ी देहाती यूजर सा जूझता है शहर के नए रवैये नए मिजाज से। पट्टी बांधे आंखों में बचपन कभी कभी मुझे ढूंढता चला आता है, लेकिन अंग्रेजी नाम वाले ऊंचे डिजाइनर टावर के सिक्योरिटी कैमरे में पकड़ा जाता है बेचारा। मेरा कभी छोटा सा एक मोहल्ला था। सिमला सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिएगा बिकॉज एको आ रही थी, तो आई म्यूटेड यू ना, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। Okay, ठीक है, थैंक यू सो मच कमल। Well, friends, I think this has taken you back to your childhood days, especially my friends who are closer to my age group. Those kind of things are now vanishing. My mother would not know कि मैंने किसके घर में खाना खा लिया। Yes, मोहल्ले में खेलने गए तो किसी आंटी ने मोहल्ले की किसी को बोल दिया कि भी आज हमारे घर में ये बनी है, चलो मैं भी अब वहीं पे खाना खाऊंगा। कैन वी डू दिस? या यही बोलते थे। So those things are now vanishing, but we need to conserve that culture. That was our strength. If India is having edge over the Western world, so-called developed nations, this is the culture. The culture which we are having, we need to conserve it, we need to preserve it, we need to value it. There are so many things which we experienced, and it looked like a phenomena to our next generation when I talk to them. Even when we shifted to Chandigarh in 1957, I was born in 1960. 1957, and I still can recall those days from my childhood as early as 1965 onwards, when I was 5 years old, 6 years old, till the time I went to the college for my +1 and +2, at that time pre-university and pre-engineering, in 76, 77 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे. We did not lock our home in Chandigarh also. What to talk about in my village? Even in Chandigarh city, where we were living, we didn't lock our home. If I have to, my family had to go to village या पटियाला जाते थे या गांव जाते थे अपने नानके या दाद के पड़ोसी को बोल जाते थे कि जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा. Yes or no? And if in our absence कोई गेस्ट आ जाता था, he or she will be taken care of. कोई ऐसे फोन करके नहीं आता था, ऐसे ही आते थे लोग. कोई फोन थे भी नहीं घर पे. हमारे घर में फर्स्ट फोन 1988 में आया, हमारी शादी के 1 साल बाद. उससे पहले तो चिट्ठी पत्रिका था, कोई मेहमान आ गया तो मेहमान आ गया. वो हमारे घर का यदि चौखट
दरवाजा खटखटाता है, एंड इफ ही फाइंड्स के हमने रिप्लाई नहीं दिया, बाहर कुंडी देखता है तो पड़ोसी के घर जाता था, एंड द पड़ोसी विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स. Yes, and where we have traveled so far now, my dear friends. We have traveled a long distance. Probably those days will never come back to our lives again. We can never think of. सबसे ज्यादा डर तो पड़ोसी से ही लगता है. यदि मैं अकेला जा रहा हूँ रात को कहीं पे भी, सबसे ज्यादा डर पुलिस से लगता है. कोई पुलिस वाला ना टकर जाए, कोई गड़बड़ हो सकती है. You know, we require police to policing. मैं पुलिस का निंदक नहीं हूँ. Police is for our security and safety, but somewhere we are deteriorating in our interpersonal relations, in our securities. जो कंसेप्ट आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ले रहे हैं, वहां पर अब ये कंसेप्ट आ रहा है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम विद इन द स्ट्रीट्स, ताकि लोग आपस में बातचीत करें और आपस में एक दूसरे की. ये हमारे पास ऑलरेडी था, which is now slowly moving out of our culture, whether we like it or not. But we need to preserve that. We need to trust. There are three things which are very essential for the interpersonal relations. मेरे पास पूरी पीपीटी है. पीपीटी दिखाने का मेरे को कोई मजा नहीं आता. बात करने से बात ज्यादा अच्छी होती है. Three things are very basic and very important for any interpersonal relations. I call it UTL. सिविल इंजीनियर है यहाँ पे कोई? UTL का क्या मतलब है मैम? UTL UDL होता है वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो उसी का शॉर्ट थोड़ा सा चेंज है, UTL. UDL is used in our civil engineering. Yeah. UTL stands for 3 letters. U stands for understanding. Any relationship you talk about, first requirement is understand. You understand other and give opportunities, make all efforts that you be understood by others. U stands for understanding. This is a prerequisite for any interpersonal relationship. May it be a stranger, may it be your family member or your friends or your colleagues. Understand. If you understand, you have won half the battle. 50% of your interpersonal relationship are taken care of when you start understanding. Then comes the another letter, T. Trust. Once you understand, you start building up the trust. And my dear friends, ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत बड़ी एक बात है. फॉर बिल्डिंग अप ट्रस्ट you need to be trustworthy yourself first. People should know. ये मैं जो मेरी PPTs हैं उसका मैं असेंस निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ. ट्रस्ट वर्दी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. When other people can trust you, you are so trustworthy. हम लोग ऐसे इंग्लिश में बोल देते हैं ना, he is so trustworthy. Trustworthy means you can actually trust on that person. अभी मैं आपसे एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं कि लेट अस से गॉड फॉरबिड्स रात के 12 या 1 बजे हैं, 2 बजे हैं. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, क्लोज योर आइज फॉर ए सेकेंड and try to find out which are the people who come in your mind first, beyond understanding, whom you can trust that I can call him and he or she will come to my help. You can count maybe in one hand of the fingers. ये अच्छा इसको बुला सकते हैं, इसको. ट्रस्टवर्दी होना कितना इंपॉर्टेंट है. And all of us are not living on the moon. We all have those kind of emergencies in our homes. At that time, our social relationships, our interpersonal relationship were very significant. Why anybody will come to your rescue, your help at 1 o'clock if you are not available to anyone?
it is all exchange, it is all mutual. People in my street, I know this house में एक लड़का एक यहाँ पे है, रिश्तेदार तो सभी दूर में है अभी. He will come. My friend in Panchkula, in 15 minutes time, he can come. ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, या ये मेरा ब्रदर है, या ये वट एवर रिलेशनशिप योर, ये मोहल्ले में एक मेरा स्ट्रीट का लड़का है, या कोई भी, एक ट्रस्ट वर्दी होना बहुत जरूरी है. एंड फॉर बीइंग ट्रस्ट वर्दी दोनों तरफ से है. यू बी ट्रस्ट वर्दी एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पर्सन आल्सो टू बी ट्रस्ट वर्दी. हर एक आदमी को आप शक की नजर से नहीं देख सकते. Give chance to everyone whomsoever you come across. You are not a policeman on the चौक कि आप सबको शक किस देख रहे हैं. You are living a life. Trust everyone. Trust everyone. There may be 1%, 2%, 5% at the most who will betray your trust. Give them a chance to be trustworthy. By looking at everyone with a suspicious eyes, you are making a trustworthy person also useless person. Yes or no? Usually, excuse me ma'am, usually I come to my office 15 minutes before, and I leave my office about 1.5 hours after the office time. This is my usual routine. My office start at 9 o'clock. I usually come there at 8:30 or 8:45, and I leave 5:30 तक काम है, तो I usually go at 7 o'clock, 7:30 because of my administrative responsibilities in the institute. When there was a proposal कि हमारे पास biometric लगानी है, I opposed it like anything, not for myself. As a administrative head of the institute, our director had this compulsion that there was a directive that we must have a biometric. I said कि we are putting everybody under suspicion. Yes or no? I didn't like it. When I am coming in time and going in time and somebody is still not trusting me, how do you feel about it? There may be 5% employees who are not coming in time, who are not punctual. Let us try to not punish everybody else that they be in the queue and mark a thumb over there. And now in the COVID, we realize that how dangerous it can be. There are many other ways by which you can inculcate the habits of punctuality, discipline, kindness, so many other things which are required in an organization. Then mistrust नहीं होना चाहिए. Many times, my colleagues will tell me कि so and so बंदे ने आपके बारे में ये कहा. मैं क्या आपने सुना क्यों? Why he or she felt comfortable talking about me to you? Are you understanding? Why somebody is feeling comfortable talking about me in front of you and not to me? And why did you listen? And now you don't tell me. If he or she has any feeling or anything, and it has something to do with me, let him or her come to me and talk. These are the small changes you can bring about. Even if some people are habitual of putting on, मैम आपके पास तो बहुत आते होंगे एज ए प्रिंसिपल, एज ए HOD, घरों में भी, इसमें भी जिक्र था इस पोएम के अंदर भी, चुगलियां करनी है, ये करना वो करना. But then sometimes this can poison your ears, poison your interpersonal relationship to that extent if you are not on a very strong footing. यदि आपके रिलेशनशिप उतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं है, your buildings can shake. Yes, the most important aspect of a building is the foundation. Once the foundation is laid on, as a civil engineer मैंने बहुत सारे projects करे. I used to give lot of emphasis on the strong foundations. कि soil की testing करो, go to the hardest stratum, चाहे वो मेरी बिल्डिंग का खर्चा ज्यादा हो रहा है. They used to ask me कि भाई, मैं क्या यदि ऊपर गिरेगी तो ज्यादा नुकसान, नीचे गिर गया तो ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं. So let the foundation in the relationships is very important, and that comes with the trust. And you will come across many people who do not trust. वो आपके ऊपर
ट्रस्ट नहीं करते. And with my life experience and my research on the topic, I have come to this conclusion: people who do not trust are the people who do not trust themselves. People who do not trust other people are the people who do not, वो अपने आप पर ही विश्वास नहीं है. कहीं ना कहीं पे वो उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ. देन दे ट्राई टू, जैसे कोविड फैला ना, कंटेजियस डिजीज है, ये डिजीज फैलती जाती है आगे की आगे, आगे की आगे. वी नीड टू कट इट, वी नीड टू कट ए बैरियर, वी नीड टू हैव अवर हाथ धोने का मतलब है कीप डिस्टेंस टू दैट रॉन्ग लिसनिंग. जो भी आपको बता रहा है आके, उससे थोड़ा सा हाथ धो के रखें, अपने आप को बचा के रखें. एंड वियर द मास्क एंड देन उसका ट्रीटमेंट करें so that he or she can start learning how to trust himself or herself. These are very important. So UTL में मैंने क्या कहा? First is understanding, second is these are the basics of the third part is going to come. That these are the two basic things which are prerequisite for any interpersonal relationship. The third part, L, I think now everybody can guess that. Love. You cannot love, genuine love for your person in the street, genuine love for the family members, genuine love for your neighbor, genuine love for the co-driver, genuine love for your co-passenger, genuine love for your colleague. Trust him. Somebody is not able to come to the office in time, I trust that there can be some problem. Madam Shilpa mentioned in her lecture also, when she's getting late, she knew it very well that Mr. Singla will understand it. So that kind of trust, that kind of love, genuine love for everyone. A genuine smile will come, a genuine glow will come when you meet a person with whom you love. And that let the whole world be connected with that love. And you cannot love anybody without understanding and without trust. Yes? And it is so very important, my dear friends. For any interperson, there are no shortcuts. There are no shortcuts. I mentioned, maybe I'll take the talk about it maybe on the Friday. I'm getting a little philosophical in my session here today. Forgiveness के ऊपर बात करी, तो somebody asked Jesus. This is there in our Vedas also. I did a very thorough research on our Hindu Vedas also, Upanishads, and then Gita and Guru Granth Sahib, and then for the last 15-20 years now on Bible also. Jesus से किसने पूछा कि how can you trust everyone? I mean, how can you love everyone? वो कहता कि forgive your enemies. यदि आप अपने मित्र को प्यार कर रहे हैं और उसको forgive कर रहे हैं, what आपकी क्या greatness है इसके अंदर? Anybody can forgive a friend, but try to forgive your enemies. उसमें आपकी. And our if you read, let us say even Ramayana or Mahabharata, people tried their level best. Lord Krishna, Lord Rama, they try to forgive. They try to forgive. Yeah, मैं इसको, yeah, it is all contextual. It is all contextual. मैं फिर भी ये कहूंगा कि आज की डेट में भी हम पृथ्वीराज चौहान को, yes or no, in spite of everything else, we still know and we still have that respect. And having a respect for the other person is again another very important. UTL की बात करी हमने, understanding, trust, and love. Many times we have to take chances to trust other people. Your vulnerability is too high. Your vulnerability is, जो आपने बात कही, is very very high. Vulnerability समझते हैं? रिस्क, जो आपका रिस्क है वो बहुत हाई होता है, बहुत कुछ एट स्टेक हो सकता है. I am being reminded of an incident which happened in our institute when Professor Malhotra was principal.
He was the third principal, fourth principal in our institute, but in my tenure, कुलकर्णी was the first. उससे पहले टीके वैद्यनाथन जी से मैं उनके साथ काम नहीं करा. कुलकर्णी साहब और उसके बाद रैना साहब, उसके बाद मल्होत्रा साहब प्रिंसिपल बने हमारे. Malhotra साहब is still coming to our institute sometimes, and he is a well respected person. All the principals are, we learn from them, and they work very well. I have great respect for Professor Patnaik से लेके कुलकर्णी तक, जिनके साथ भी मैंने काम करा एज ए यंग लेक्चरर से लेके आज FIA तक. मल्होत्रा साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि he will trust his faculty like anything. तो मैंने एक बार उनको कहा कि सर, वी वर आल्सो यंग, वी वर ग्रोइंग, कि सर उसको ये वाला काम असाइन मत करो, मेरे साथ मेरी टीम में मत डालो उनको. वी वर वर्किंग इन अ टीम इन अ प्रोजेक्ट. ही इज नॉट गुड फॉर दिस. मल्होत्रा साहब सेड के लेट अस गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल प्रूव टू बी ट्रस्टवर्दी. जब तक हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, जब तक उसको हम ट्रस्ट असाइन नहीं करते, the vulnerability was that my project may not succeed. My course, that project may be a failure. He said I am ready to lose in the project than lose my faculty member. He's in the grooming stage. He's a very young faculty member. Let me trust him, and he will try to prove to be trustworthy. Now I am taking to a situation which you all face. प्रिंसिपल मैम, ऑल HODs, जो भी आप काम करते हैं, whenever we organize a function in an institute, चाहे वो स्पोर्ट्स वीक है आपके यहाँ पे चल रहा है अभी, चाहे कल्चरल प्रोग्राम है या कोई भी एक्टिविटी है, you know कि these are the few little notorious या शरारती बच्चे हैं. They are not criminals. उनका दिमाग थोड़ा सा उल्टी तरफ, जिसको आप उल्टा समझते हैं लेकिन वो उल्टा नहीं है. इनफैक्ट उनका जो डाइवर्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाट यू ट्राई टू डू व्हेन यू आर हैविंग दिस ग्रुप ऑफ पीपल एंड व्हेन यू हैव टू ऑर्गेनाइज लेट अस से ए मेडिकल कैंप और ए कल्चरल इवेंट और ए स्पोर्ट्स डे, आप क्या करते हैं फिर वहां पर? यू entrust them to discipline whom you expect that they will be indisciplined. Yes or no, ma'am? So you are proving this point. So everyone has some strengths and all. If you are able to channelize, if you give them chance to be trustworthy, they will prove to be more trustworthy. मैंने अक्सर देखा कि मेरी क्लास में I didn't class undergraduates, but then some of the postgraduate students, some students were not so attentive. Some students were very, very notorious also, even in the post graduation. Later on, I drew more respect from those students than the students who were very, very studious. दूर से देख के आएंगे, सर आपने हमारी जिंदगी संवार दी, नहीं तो हम तो अभी तक कहीं और लगे होते, कैसे करे होते, कैसे नहीं करे. So learn, ये अपने आसपास में, अपने फैमिलीज में, अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, and this is exactly what is happening in every walk of life. They only need to be channelized little bit here and there. बहुत बातें हुई हैं हमारी. मैं कुछ स्लाइड्स हैं, 1 or 2 स्लाइड्स फ्रॉम माय कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. लेट मी कम डाउन टू दोस which I think communication is one of the basic interpersonal skills. Before you speak, सर आप यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार. Okay, thank you so much, Kamal, for reminding me of this. Thank you so very much. Welcome, sir. Welcome. Before you speak, think. ये हिंदी में लिखा है मैंने. I can read it for all of you, those who are not able to read हिंदी. आदमी जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, पर क्या बोलना है यह सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी. यस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी जिंदगी निकल जाती है.
And it is said that in communication, in the interpersonal relationship, my teacher, I really would like to acknowledge him here again. He said कि कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, वो सिर्फ मूवीज में आता है महाभारत की, अदरवाइज नहीं आता. हो सकता है कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी ऐसी थी, यू कुड डू दैट, बट जनरली वी परसीव के जैसे गन से गोली निकलती है, वापस नहीं आती ना गन के अंदर. लेट अस फॉर ए मोमेंट अज्यूम के कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है. वो वापस गोली, एक बंदूक से गोली निकली हुई वापस आ सकती है. ही सेड कि आई कैन एक्सेप्ट दैट. हाँ, तो चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट. कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द वापस. आप कितना ही बोल लें कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब था, ये था, वो था, उसने तो सुन लिया भाई. उसने तो पढ़ लिया भाई. Yeah. So before you think, before you speak, think very carefully. Thoughtful. मैडम ने एक वर्ड यूज करा था, शिल्पा मैडम ने, mindfulness. Be mindful of it, what you are going to communicate. Be mindful of the sensitivities. Yesterday he mentioned about his nature, about his emotion. Let us be mindful that he is very emotional. This will touch him. This will do like this. My relationship with him is not grown up enough that I should think about it. और मैंने इसको थिंक को THINK, ये 5 लेटर्स है ना, 5 अल्फाबेट्स हैं, थिंक बना. तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कहा कि थिंक इफ इट इज ट्रू और नो. इफ इट इज नॉट ट्रू, then do not speak. Think if it is helpful. Many times I say certain things which are not helpful. Think if it is inspiring. Many times we do mistakes on this. Many times we do mistakes on this. मैं किसी के घर में गया खबर लेने के लिए कि वो कैसा है. मैंने कहा मेरे दादाजी को भी ये प्रॉब्लम थी, वो तो चल बस है भाई. फला को भी ये प्रॉब्लम थी, उसके साथ ये हो गया, ये हो गया. नो, वी ऑल है. उतनी बात नहीं करते, लेकिन उसके क्लोज तो पहुंच ही जाते हैं कि यार उसको तो फिर पीजीआई में एडमिट करना पड़ा, ये हो गया, ये हो गया. नो, इट इज नॉट इंस्पायरिंग, इट इज नॉट हेल्पफुल. we keep on talking. वो सुन रहा है बेचारा, वो पहले ही he is passing through this thing. You are trying to regenerate him, or you are trying to further discourage and demotivate him. Think about it. बंदा पढ़ रहा है, अरे यार ये टॉपिक तो बहुत टफ है. Whenever my children, both of them, they used to come to me with a very hard problem, I used to tell them in a physics or in mathematics, in a +1 and +2, I said, this is the simplest topic. This is the simplest formula, the simplest thing. You need to only do this. It is up to the teachers to make a topic simple or complex. Your only role, coming to pedagogy again, your only role to come to the class and present a topic is, your only role is to make the topic simple enough that they are able to understand it. Yes or no? अदरवाइज तो किताबें हैं, गूगल है, तो सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ है. योर ओनली रोल इज टू प्रेजेंट इन ए वे दैट दे आर फील इंस्पायर्ड टू इट. एंड इवन इफ यू आर नॉट, you know, when I was doing MTech, one of my professors, Dr. P.V. Rao, who was my guide in my thesis also, salute to him, he will not teach us the curriculum. He said, I teach curriculum only in the BTech. For MTech students, there is no curriculum, and you are matured enough, you are grown up enough in the civil engineering or in the sciences that you will do the curriculum anyway. Let me teach in the classroom beyond curriculum. And we went to the Professor Sehgal, who was principal at that time. He said, sir, Dr. P.V. Rao curriculum पढ़ाते ही नहीं है. वो कहते P.V. Rao will never teach curriculum in the classroom. He taught us 3 subjects on hydraulics, advanced hydraulics,
He was masters of boundary layer theory. I mean, he will talk about the scientists. He will talk about much bigger things which was mentioned in the curriculum. But it was so inspiring. He made us inspired to read the theories, read about the people and all. And today I'm talking about him in front of all of you. Similarly, so many teachers, if you are able to inspire your student to read, you have done your job. What to read और कहाँ से लेना वो मटेरियल वो ढूंढ लेंगे. Content, though content is important. I don't be like PV Rao's. Everybody cannot be PV Rao's, and we should not be. We require all kinds of teachers. But I'm telling you, but he was very inspiring teacher. Whenever he used to give a class test, he will never sit in the class to watch कि आप copy तो नहीं कर रहे. He will give a test, write it on the blackboard, and go to his room, make a submission. And we used to say कि वो कहाँ से निकालेंगे solutions. वो करिकुलम ना पढ़ाते थे ना उससे पूछते थे कुछ भी. Go to library, do this. This is a different. I saw that thing happening in BITS Pilani and in IIT Kanpur also when my students were open. In BITS Pilani, 70 to 80% tests are open book, and they are more dangerous and more tough. Exactly. So coming back to the interpersonal relationship, be very inspiring. Dr. P.V. Rao is the first person to stand by you whenever you are in a difficulty. Any kind of difficulty, you will find P.V. Rao is there. That kind of a character he had, but very tough in his subject. N stands for, is it necessary? Think about it. Whatever you are communicate, is it necessary for you to communicate? If it is not necessary, observe silence. And the last one is the most important, be very, is it kind, my way, or whatever I'm going to speak, or whatever I'm going to write. When I joined as a faculty charge administration, some of my faculty colleagues and my staff members said, सर जो आप सर्कुलर निकल रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर निकल रहे हैं, उसमें लैंग्वेज में बहुत चेंज आया है. मैंने क्या है, देख सर के इज मच मोर काइंडर. मैंने मेमोज 0 कर दिए. 0 means absolutely no explanation to anyone. I said, okay, why should we have explanation? I can easily call that person in my chamber and ask him what's the problem with. But there can be certain elements who require that. But it cannot be applied to the people who are trustworthy, who are honest, who are doing this. We cannot measure the same thing with the same yardstick. Okay? Be very kind. ये मैंने कल बात करी थी आर्गुमेंट वर्सेस डिस्कशन की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में. When you argue, a situation can come in the street, in the home, everywhere when you can hold each other's neck. Not virtually sometimes. The ego is the main cause for the I discussed yesterday. And a situation come when both the parties are not in a state of communication, not in the state of listening. Only Professor Soni is listening now. And what it takes to go on your knees and tell, I am sorry, I didn't mean it. आपकी कितनी एफर्ट चाहिए इसके लिए बताइए मेरे को. Whether you are wrong or not wrong is not the issue at all. But going on your knees, when Lord Krishna went to Duryodhan to beg the peace, he went on his knees. क्या लॉर्ड कृष्णा फिर छोटे हो गए? यस और नो? अंगद जी या हनुमान जी जब लेके गए, क्या वो छोटे हो गए? That was going on your knees to your enemy to ask for a peace. Yes or no? They gave them enough chance to do that. Okay. And if you are having the discussion, lot many people can discuss on what is right instead of who is right. And a mature people always want to win. Immature means those who do not have grown up. Age का concept नहीं है इसके अंदर. Immature people always want to win an argument. मैं जीत गया, मैं देखो मैंने उसको मना लिया अपनी बात के ऊपर. Even at the cost of a relationship. A mature one, your maturity, you may be
mature in age, but you are not mature if you are sacrificing a relationship for an argument. A mature one prefer losing an argument. Argument तो lose कर लिया, just to uphold a golden relationship. बेसिक है ये बहुत इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल के लिए. Arguing with stupid people is like killing a mosquito on your. You might kill it or not, but you will end up slapping yourself for sure. ये चॉइस आपकी है अभी बस. It is all a matter of perspective. It is all a matter of. आपको जहां से 6 नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है, उसको वो 9 नजर आ रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक है. Yes. So these are the things which I thought let me have a little. And now, my dear friends, I like to share a small incident, a story with all of you. Are you ready for this? क्वेश्चन है 6 और 9 में वर्सेस 6 नजर आ रहा है वर्सेस 9 नजर आ रहा है. What is correct? That the situation will tell perspective. बाद में पता लगेगा कि कहाँ पे आप अप्लाई करके पता लगेगा कैसे होगा. But you are arguing only on that. But let us try to understand the other person's perception and perspective also. What I'm trying to say through that image was, let us try to understand his or her perspective. क्लास में कई बार बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है टोटली इररेलेवेंट, कुछ पर उसके पर्सपेक्टिव से उसको वही ठीक लग रहा है. यू आर देयर टू करेक्ट हिम and give him or her enough time, facilitate him to see what is, whether it is 6 or whether it is 9, and then leave it there. Okay, this is a small incident which I wanted to share with all of you with a very great moral in this. Run your own race. And my dear friends, I'm talking about interpersonal relations here. Now it so happened, I was cycling and noticed a person in front of me about 1/4 of a kilometer. वो मेरे से 250 गज आगे चल रहा था. ऐसा हुआ कि I was cycling and I noticed a person who is about 250 meters ahead of me. I could tell he was cycling a little slower than me and decided to try to catch him. I had about a kilometer to go on the road before turning off. मेरे पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था. मेरे को लग रहा था मेरे से स्लो ड्राइवर है, ये स्लो बाइसिकलर है, and I wanted to catch him up. And this is happening in our lives. Relate it to your lives. Sometimes you find कि ये मेरे से कम इंटेलिजेंट है, यहाँ पहुंच गया, ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ पहुंच गया, ये मेरे से ऐसा है, मेरे से ऐसा है, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. So I started cycling faster and faster. Every block I was gaining on him just a little bit. वो भी चल रहा था, मैं भी चल रहा था. मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई. Block by block I tried to cover. After just a few minutes, I was only about 100 yards behind him. Be with me on this story. So I really picked up the pace and pushed myself. I had only 1 kilometer to cover. मेरे को लग रहा है कि मेरी 65 साल की जॉब है, 65 तक लेके होगी नहीं, इससे आगे निकलना भैया हमारे को. तो इससे पहले एचओडी बनना है, इससे पहले प्रिंसिपल बनना है, इससे पहले ये करना है, इससे पहले वो. इंडस्ट्री में तो ये रेस और भी फास्ट है. वहां पर टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है. हमारे इंस्टीट्यूट में टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है. सो यू कैन ओवरटेक अदर पीपल. सो आई रियली पिक्ड अप द पेस एंड पुश्ड माई सेल्फ. You would have thought I was cycling in the last leg of an Olympic triathlon. मैं उस स्पीड से दौड़ना शुरू करा मैंने. Finally, I caught up with him and passed by him. This is very interesting slide. मैंने उसको ओवरटेक कर लिया. I felt so good. I beat him. Of course. But he didn't even know we were racing.
दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस इन दिस होल स्टोरी. उसको पता ही नहीं था कि मैं रेस लगा रहा हूँ, वो तो अपनी चाल से चल रहा था, मैं ही पीछे पीछे अपने मन में थॉट लिया और भागना शुरू किया. उसके पास ये कार है, हम उससे बड़ी कार लेके देखेंगे. उसको पता ही नहीं है कि मैं उससे रेस लड़ रहा हूँ. उसके पास ये मकान है, उससे बड़ा कोठी बनाएंगे. उसको पता ही नहीं कि मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ. यस, उसका बच्चा यहाँ पे पहुंचेगा, अपने बच्चों को वहां तक, उसके लिए आप क्या टॉर्चर कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर. उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एप्टीट्यूड का कैसा 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 नहीं, कैसे सर्कमस्टांसिस है. It is good to have a healthy competition. It is good to have, but then let us come to the end of the story. After I passed him, I realized that I had been so focused on competing against him that I had missed my, जहां मेरे को मुड़ना था मैं मुड़ा ही नहीं, मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं. Isn't it so interesting? Had gone on nearly 6 blocks past it and had to turn around and go all the way back. उसकी रेस तो बड़े मकान की थी, मेरी रेस तो रोइंग की भी थी साथ में. मेरी रेस तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की भी थी. मेरी रेस तो मेरे बच्चों को आगे आईआईटी पढ़ाने की भी थी. किसी और की रेस हो सकता है कि यही थी कि उसको डायरेक्टर बनना है या उसको इतने पेपर पब्लिश करने हैं. माई रेस वॉज ए डिफरेंट रेस ऑल टुगेदर. और मैंने उसकी रेस में अपने टर्न भी भूल दिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रनिंग समबडीज रेस? Isn't that what happens in the life? When we focus on competing with co-workers, neighbors, friends, family, trying to undo them or trying to prove what that we are more successful or more important. No, ये लाइफ में ऐसा होता है. This the whole story is talking about running your own race. वी ट्राई टू प्रूव. कल कोई बात कर रहा था ना कि लोग क्या सोचेंगे. कल कल की बात है. somebody was saying what people will think about. Ma'am also came to me and said कि people think that I am very mild and very very soft spoken and this. Do not. This is their cup. They have their own salvation. You have your own salvation. You have your own. One of the biggest crises of today, and it has been there for quite some time, is your identity crisis. मैडम का जो फर्स्ट लेक्चर था ना कल, वो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर था. 9 out of 10 people are struggling for identity crisis. मैं हूं क्यों? यदि मैं कल नहीं हूं तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? What is my purpose in the life? Some other day, if you ever get chance or I get a chance to talk to you on the personality development, I talk on those issues in the personality development. Your individuality, not your personality. Your individual, what God has made you, realization of that is more important than comparing yourself with the unknown competitions, unhealthy competitions, so-called, in the rut of running the false races. It is not an Olympics which we are running here in this world. Are we? We are not in a sports arena here. We spend our time and energy running after them and we miss out our own path to our destinies. ये लास्ट स्लाइड है इसकी. आई गिव यू 1 minute टाइम टू काइंडली रीड इट. अपने अपने मन में पढ़ लीजिए इसको. Yes. Try to remember. This will really help you. This will help you in relation with your own self and also in relation with your fellow drivers, fellow neighbors, fellow co-passengers in this journey of life.
Thank you, my dear friends. Now the time is 1:30. Let me share with you a small video here now. Then we come back to the some more discussions on this topic of interpersonal relations. First of all, your interpersonal relations से important है your intrapersonal relation. The relationship with you have with your own self. I am not dwelling too much on it because ma'am has covered a give you complete session on that on the first day. Your intrapersonal to interpersonal. First of all, knowing yourself and then knowing your relationship with everyone, and then ultimately knowing yourself, your relationship with him who is the ultimate creator. ये एक बहुत ये भी हिंदी में है. आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम नॉट हिंदी स्पीकिंग एरिया, बट दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. ये है 5 रिग्रेट्स के ऊपर. ए स्टडी वाज कंडक्टेड, जेन्युइन स्टडी के ऊपर फाइंडिंग्स हैं. People who are knowing that they are on the terminating diseases or some kind of a, they knew that now they are going to not live very long, and a study was conducting on a sample of the people, and people were asked कि what regrets you have. यदि आपको अभी आपका जीवन पूर्ण होने वाला है, and what are the regrets you are having, the top 5 regrets, उसके बारे में ये स्टडी की फाइंडिंग्स हैं. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, and one of them is your interpersonal relationship, and that is being translated in 2-3 more ways in this small video over here. I request my friends who are joining online to kindly increase the volume on your laptops or your mobile phones from wherever you are logging in, and please listen to this video very carefully. सुना है मरने से पहले एक इंसान की पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह चलती है. जरा सोचकर देखिए, वो फ्लैशबैक कितना पेनफुल हो सकता है अगर वो रिग्रेट से भरा. काश, आई विश. लेकिन उस टाइम पर सोचने का क्या फायदा जब आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते. अगर आपने लाइफ के बारे में इस नजरिए से कभी नहीं सोचा है तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए. दोस्तों, मैं हूं निधि, ये है 5 मिनट का किताबी ज्ञान, और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ब्राउनी वेयर की किताब के बारे में, जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द टाइम. इस एपिसोड को बनाने का मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाएं, आप सैड हो जाएं. इनफैक्ट अगर आज आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और समझी तो ये एपिसोड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा. हर किताब की एक बर्थ हिस्ट्री होती है, और इस किताब का जन्म हुआ है उस ऑथर के हाथ जो ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उन पेशेंट्स का ध्यान रखती थी जो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज में वहां आते थे. इन्हीं पेशेंट से बातचीत के दौरान ब्राउनी ने रियलाइज किया कि हर मरते इंसान के मन में कोई ना कोई रिग्रेट जरूर था. और कमाल की बात यह थी कि पेशेंट्स में आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन उनके रिग्रेट्स सिमिलर थे. उन्हीं में से टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में ब्राउनी ने अपनी किताब में लिखा है, जो कि अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ताकि आप वो रिग्रेट्स ना दोहराएं. रिग्रेट नंबर 1, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह करे बगैर कि लोग क्या सोचेंगे. हर मरते इंसान के मन में ये रिग्रेट था कि वो पूरी जिंदगी ये सोचते रह गए कि लोग क्या सोचेंगे, और कभी अपने मन की नहीं करी. ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या सोचेंगे. वहां मत जाओ, लोग क्या सोचेंगे. ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे. और आज जब वही लोग अपने डेथ बेड पर हैं, मरने जा रहे हैं, और जिन लोगों की परवाह में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उनमें से एक इंसान मिलने नहीं आया. कुछ लोगों ने अपने मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं करी, लोग क्या सोचेंगे. कुछ लोगों ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया, लोग क्या कहेंगे. कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब फॉलो नहीं करी, लोग क्या सोचेंगे. नाउ आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू टू गेट रेबेलियस. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं उनके लिए एक स्टैंड लीजिए. अगर आप पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा. रिग्रेट नंबर 2 जो ज्यादातर मेल्स को था वो ये था कि काश मैंने इतना काम ना किया होता. काश मैंने अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताया होता. काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा होता. यहाँ ऑथर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हार्डवर्क मत कीजिए, बट इफ यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल एट द कॉस्ट ऑफ योर यूथ, वो प्राइम टाइम जो आपकी लाइफ में कभी लौट के नहीं आने वाला है, देन यू आर पेइंग अ फिनोमिनली हैवी प्राइस फॉर दैट सक्सेस. तो अपनी लाइफ को प्लान कीजिए. जो लोग आपके दिल के करीब हैं ना, उनके लिए समय निकालिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा. रिग्रेट नंबर 3,
काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपनी फीलिंग्स बता सकती। और फीलिंग्स से यहाँ ऑथर का मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। काश मैं अपनी माँ को बता सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं अपने भाई से कह सकती कि वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। काश मैं अपनी कज़न को बोल सकती कि एक दिन उसने मेरा कितना दिल दुखाया था। डे टू डे लाइफ में जो लोग हमारे नज़दीकी हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं, या तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं या सोचते हैं चलो छोड़ो आज नहीं फिर कभी कह देंगे, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आपको कह देनी चाहिए, इंतज़ार मत कीजिए, उसे बोल दीजिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी होगा। रिग्रेट नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता, उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता। और याद रखिए ये वही दोस्त हैं जिनके बिना एक समय पर हमारी जिंदगी नहीं चलती थी। माना अब वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए होंगे, जॉब के लिए बाहर चले गए होंगे, लेकिन वी लिव इन अ गोल्डन एरा। आप उन्हें फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज गेट बैक टू योर फ्रेंड्स, वरना दोस्तों को खो देने का रिग्रेट आपको भी जरूर होगा। रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हर मरते इंसान ने ये बात मानी है कि उसे पता था उसे किस चीज से खुशी मिलती है, पर उसने अपने आप को वो काम नहीं करने दिया, या जिंदगी भर ये सोचा कि उसकी खुशी किसी और से जुड़ी है। आपकी खुशी का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लो ना उतना आपके लिए अच्छा है, वरना ये रिग्रेट आपको जरूर होगा। आपने कभी किसी मरते इंसान को ये कहते सुना है कि काश मैं एक बंगला और बना लेता, काश मैं एक प्लॉट और खरीद लेता, काश मैं थोड़ी ज्वेलरी और बनवा लेती? नहीं ना। मरते समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों का रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट उन चीज़ों का होता है जो हमारे आसपास थी, हमारी रीच में थी, लेकिन हमने फिर भी उनकी कदर नहीं करी। इस किताब से ना मैंने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, ये डेफिनेटली सीख लिया कि लाइफ में कुछ भी कमाओ, रिग्रेट मत कमाओ। अगर आप भी लाइफ के बारे में मेरी तरह गहराई से सोचते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत जुटाइए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए। My dear friends, I think the time is now coming very close to this session. But before I go, I want to show you 2 more videos. My session is not complete on interpersonal relationships without these 2 videos. The first video is a story which is happening in every household, almost on every day-to-day basis. And you will understand it that the importance, the significance of interpersonal skills kaise hai. We have to be little thinking away from my own self. यदि मैं अपने से थोड़ा सा पर दूसरे के पर्सपेक्टिव से कमिंग बैक टू द सेम थिंग सोचता हूँ थोड़ा सा, तो देयर कैन बी ट्रेमेंडस चेंज इन आवर बिहेवियर एंड इन आवर कंडक्ट. This small video is on that. Okay, this is again in Hindi. जी yeah. तुम समझते क्या हो? यहाँ पर मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने कहा क्या? लेकिन बिहेव तो तुम ऐसे ही करते हो ना जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नौकरानी बैठी हुई हूँ। अरे यार, मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भैया मेरी शर्ट प्रेस नहीं है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना जिसका तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। मैं कोई जादूगर नहीं बैठी कि तुमने सारे बोला कि ये काम कर दो वो काम कर दो और सारे काम हो जाएंगे। मैंने कब कहा कि तुम जादूगर हो? मैंने ऐसा कहा? बोलने की जरूरत नहीं होती है ना, तुम्हारी हरकतें बता देती हैं। अनु ये कर दो, अनु वो कर दो, मेरा खाना बना क्या, मेरे कपड़े हुए क्या। अरे मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना है। ठीक है, शांति से ऑफिस जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम शांति से ऑफिस जाओ, घर का माहौल अशांत करके तुम शांति से ऑफिस जाओ और मेरा मूड कैसा भी रहे। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? हाँ, तब से बोले जा रही तेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऑफिस जाना, शांति से जाना चाहता हूँ। चुप नहीं हो सकती तू? कैसे चढ़ के आ रहे हो ना मेरे ऊपर तुम। मारोगे मुझे? तुम मारोगे? मारो ना, मारो मुझे। तो मेरे को ना बेफजूल प्रोवोक करने की कोशिश मत कर, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। हाथ क्यों उठ जाएगा? तुम्हारा हाथ तो उठ ही गया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मम्मी, बेटा बेटा क्या हुआ है? हाँ मम्मी मुझे याद नहीं रहता मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। अरे बेटा, पर हुआ क्या है? कम से कम एक बार हमको बताओ तो सही। तुम बस बात हुआ मम्मी, हम नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। क्या हुआ? इसने हाथ उठाया मुझ पर। किसने? राहुल ने। बेटा तुम एक काम करो, तुम सीधे अपना सामान बांधो और चुपचाप घर चली आओ। तुमको 1 मिनट भी वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे जरा? दामाद जी ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। कल को तो वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। अरे 1 मिनट रुको यार, तुम मुझे फोन दो जरा। हाँ बेटा, क्या हुआ? राहुल
राहुल ने हाथ उठाया मुझ पर पापा। हाथ उठाया मतलब मारा? नहीं, लेकिन हाथ उठाया मेरे ऊपर। मतलब मारा नहीं? नहीं, लेकिन शाम को तो आकर मार सकता है ना मुझे वो। गुस्से में था? हाँ बहुत। बेटा तुम तो शांत थी ना, तुम तो गुस्से में नहीं थी ना? नहीं, मैंने भी गुस्से में बहुत सुनाया। तो अब क्या चाहती हो? मुझे नहीं रहना पापा, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, घर आ जाओ, लेकिन दोबारा जाओगी तो नहीं? नहीं। हाँ तो बेटा आ जाओ, तुम्हारा तलाक करवा देते हैं उससे। लेकिन तुम श्योर हो ना कि दोबारा जिससे शादी होगी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेगा और तुम उससे गुस्सा नहीं करोगी, तुम दोनों के बीच में झगड़े नहीं होंगे? अगर तुम श्योर हो तो आ जाओ, और अगर श्योर नहीं हो तो फिर वहाँ रहो, उससे बात करो जब वो आएगा, ठीक है? आराम से बैठकर मामला सुलझाओ, जैसे तुम्हारी मम्मी और हम बैठकर सुलझाते हैं। भाई झगड़े किसके बीच में नहीं होते? तुम्हारे भाई के बीच में भी हुए हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुए हैं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में भी हुए हैं। कई बार तुम्हारी माँ ने तुम पर हाथ भी उठाया है, और कई बार ना सिर्फ हाथ उठाया है बल्कि मारा भी है। क्या तब भी तुम घर छोड़कर चली गई थी? बोलो। नहीं। तो फिर अब क्यों वो घर छोड़कर आना चाहती हो? भाई उस घर को भी वैसे ही अपना मानो जैसे तुम इस घर को अपना मानती थी, जैसे तुम हमें अपना मानती थी, ठीक है? शाम को जब वो आएगा तो उससे प्यार से बात करना, जैसे हमसे करती थी लड़ने के बाद, ठीक है? क्या हुआ? फोन काट दिया लगता है। हाँ तो ऐसे कौन बोलता है अपनी बेटी को? अरे भाई आज हम जिंदा हैं तो वो लड़के आ जाएगी यहाँ, कल जब हम जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएगी? मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही वो अपने हालातों से भागती रहे। याद है बचपन में एक बार जब वो गिर गई थी, रो रही थी, और जब मैं उसको उठाने जा रहा था तो तुमने क्या कहा था? यही कहा था कि उठाना मत उसको। अगर आज तुमने उठा दिया उसे तो वो हर बार गिरने के बाद रोएगी और ये इंतजार करेगी कि कब तुम आकर उसे उठाओगे। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर थोड़ी देर बाद रोने के बाद जब उसे लगा कि तुम नहीं आओगे तो वो खुद ब खुद उठ गई थी। क्या उसके बाद जिंदगी में जब वो दोबारा गिरी, रोई, उसने मेरे आने का इंतजार किया? नहीं किया, बल्कि हर बार खुद ब खुद उठ जाती थी। हाँ तो बस जो तुमने उसके बचपने में किया आज वही मैं कर रहा हूँ। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ एक्चुअली ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा काम था नहीं तो इसलिए। पानी लेकर आऊं? नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, मैं सुबह थोड़ा ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। सॉरी, मैं भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए कि तुम दिन भर इतना काम करती हो तो मुझे भी समझना चाहिए कि तुम भी बाहर रहते हो, इतनी सारी परेशानियां होती होंगी। आगे से तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम कहाँ शिकायत का मौका देते हो? मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे। चलो इसी बहाने कम से कम तुमको ये पता तो चला कि गलती किसकी तरफ से होती है। मार अभी खाओगे कि खाना खाने के बाद खाओगे? खाना खाने के बाद ही खा लूंगा। वैसे बिना प्रेस की शर्ट अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए क्या? मम्मी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा सब नॉर्मल है ना? हाँ सब अच्छा है मम्मी। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी रखती हूँ। वो अभी अभी ऑफिस से आए ना तो इनके लिए थोड़ा चाय बना देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रही थी कि अभी अभी ऑफिस से आए और इन्हें चाय पिलाती हूँ। देखा देखा, जरा से गुस्से में अगर पानी ना डाला जाए तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती। अरे पति पत्नी के बीच में तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, जहां आप बीच में पड़े बस वहीं से दूरियां बढ़ी। अरे आजकल के जो माँ बाप है ना, इनका बड़ा योगदान रहता है बच्चों के तलाक में। पति पत्नी है, लड़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो ये नहीं समझेंगे कि जिंदगी में एडजस्ट करना कितना जरूरी होता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वही तुम्हारी पुरानी बातें है ना? मेरी इन्हीं पुरानी बातों की वजह से हम आज भी साथ हैं। So, my dear friend, this is all about the interpersonal relationship. Give yourself, give the other person enough time to understand, to trust, and to love. Let your hearts not be at a distance when you are talking to each other, when you're trying. Be trustworthy and trust other person. Sometimes, uh, let me share my personal testimony on this. Many times, when my children were growing, my wife was having a lot of responsibilities in the college, being the dean academics in the college, engineering college there.
and she will come very tired, and next day बच्चों का एग्जाम भी है, and she was taking care of their academics largely. मेरे को पता होता था कि उस समय अभी ये जो है जो बैरोमीटर है वो हाई प्रेशर के ऊपर है. Why not? I mean, if today my children have done good in their academics, largely it is because of my parents' care and her academic inputs in that. So you have to understand that she has just now come, and if I tell her कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, it's not the right time. Timing is very important in communication. What to communicate, even if she is trying to find out the reasons to fight back, ignore that. Sometimes you have to ignore, you have to keep silent in that. And I used to give her enough time. Within an hour or so she will, जैसे अभी आपने देखा है small clips के अंदर, this will happen like this. Reconciliation, acceptance, agree to disagree, be vulnerable in your relationship. Be vulnerable. There is a vulnerability that some people will not come in time if I do not put the biometric. Be vulnerable. Let them not come in time. 95% people को मैं punish नहीं कर सकता because of those 5 vulnerabilities. Are you getting? Because somebody's house में ऐसा हो रहा है, I am expecting कि my children will do the same thing. My father, my children, ऐसा ड्राइवर कर रहा है, उसने ऐसा कर लिया. We try to jump and try to take everything personally. That is not a very healthy sign in an interpersonal relationship. And I come back to the same thing which I asked yesterday: who is the closest, whom you love most, or who has loved you the most is your mother. And for that kind of relationship, my dear friends, it is again a personal testimony, but let me share it with you, all of you. My friends who are offline, online here also can hear me on this. Let me share what a mother is, what a father is. And all of you who have the children at home must be experiencing, and we have been children. It so happened that about 4 years back, my mother was diagnosed with a cancer, and she was admitted in the hospital. And the doctors were trying to treat her with all the treatment which was possible, through radiation, through chemo, through all those things. Very painful disease and very painful treatments too. And the doctor will say that I cannot give her this kind of medicine unless she is able to take food. खाना खाएगी, उसके बाद ये dose जानी चाहिए, and I don't want to put her on the pipe feeding. So many times I used to lose my temper. Can you imagine? She is on the bed and she is suffering. I could not see her suffering, and I used to lose my temper कि mom कल शाम को आके डॉक्टर पूछेगा राउंड के ऊपर कि क्या खाया. Everything has to be tabulated, and if I say कि ये टेबल में उसने ये खाना था, ये खाना, डाइट, उसका डाइटिशियन ने डाइट प्लान बनाया हुआ है, and you cannot be administered a medicine unless you take this. She won't listen because उसकी जो पोजीशन थी, she was not able to take anything. Are you getting my point? और खाना जरूरी था, नहीं खा रही है. मेरे को फिर बच्चों वाली जिद लगती थी. I used to sometimes raise my voice, tell other people in the ward के neighboring ward में कि यार ये कुछ आके बात करिए. My mom, that love, affection and all. एक दिन फिर वो अल्टीमेटली खा लेती थी जबरदस्ती कुछ करके. थोड़ा खाया, 50% खाया, 20% खाया. I'm talking about the interpersonal relation and the love the mother has. One day she is a daughter of a doctor. My Nanaji was a doctor. She knew about medical science a lot, though she did a very high qualifications and all. One day we were talking a lot during that time. I was on leave from my office and spending all my time in taking care of her because my brother and sister, they live in US. So one day she called me. She said, Pramod, my time is approaching. You have to accept it. And तुम मेरे को गुस्सा मत किया करो. मैंने कहा सारी जिंदगी तो आपने भी गुस्सा करा, मैंने भी गुस्सा करा. This is the most enjoyable of our relationship is कि मैंने आपको गुस्सा करा और आपने मेरे को गुस्सा करा, और ये मेरा टाइम है गुस्सा करने का. जब आप कहना नहीं मान रहे और आपकी
हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है ये तो अब। तो वो कहती कि मेरा तो टाइम आ गया, तुम बाद में इस बात को लेके रोओगे कि मैंने अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करा। कैन यू इमेजिन दिस? ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो शी वाज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। शी मेरे गुस्से को माइंड नहीं कर रही थी। वो इस बात से चिंतित थी कि मैं बाद में रोऊंगा इस बात को लेकर कि मैंने अपनी मम्मी को गुस्सा करा लास्ट टाइम के ऊपर। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ ए मदर। And my dear friends, that is why the mother is a mother, an empathetic listener. वो मरते दम हमारे एक और स्टोरी है, मे बी tomorrow after tomorrow I'll talk to you about that story also, कि मरते समय भी उसको अपनी चिंता नहीं हो रही थी कि मैं जाने वाली हूँ, मेरे को ये करने वाला है, मेरा बेटा बाद में परेशान ना हो कि मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। एंड वेरी ऑफन देन नॉट we try to lose our temper to the closest ones in our family, to the closest one. We take them so much for granted. All said and done, we do all that. But then, my dear friends, this is a time for us. अब वो regrets हैं आपके पास। मैंने पिछली बारी जो वीडियो दिखाई थी regrets वाली, this is a time when you are living and you can live a life without regrets, and you can overcome those regrets so that you don't have to regret. आपने एक अपने दोस्त को लॉस कर दिया बिकॉज ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक स्पाउस को, एक फ्रेंड को, एक कुलीग को, later on he or she is also regretting, you are also regretting. Let us have the reconciliation, let us have the acceptance. This is very important in the life. This is the last video. बहुत बार ऐसा हुआ कि parents had to reflect a lot of patience. I am talking about the interpersonal skills. One of the skill is having patience. And when we were very young, we didn't have the vocabulary, we didn't know many things. I asked so many questions from my father, from my mother. ये क्या है, 50 बार उन्होंने बताया। अब वो 2 बार पूछते, हम कहते हैं कि yes or no. I really regret on that. अरे फिर my dad is now in 94 and he asked me, और थोड़े से हार्ड ऑफ हियरिंग भी है, उनको समझ भी कम आती है। आई टेल हिम कि डैड मैंने अभी तो बताया था आपको। वो कहता दोबारा बताओ तो फिर क्या हुआ। Do we have that patience? Not only with my father, with my colleagues, with my other people, my students in the class. This video is about that. Let us watch this video, my dear friends. Very interesting and a life lesson for all of us. This is again in some other language, but you can understand it very well. The situation, I have explained it to you. There are no dialogues in this movie. Son and a father. Τι είναι αυτό? Read the titles. Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Thank you so much, my dear friends. We need to have patience in our relationships.